So that's Raveena, and she's taking care of this entire thing for us, and she's been super. So, Don't you need one? No, I don't. Thank you. Yeah, that is Hi. Hi. Just meeting you last time. Oh, okay. He wanted to have a picture with you. Great. Thank you. Hi, so sweet. Hi. So this is just a small gesture. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, who's that? Who's the little one? Come here. Come, you also come here. She wants a separate picture and one autograph. Sure. What's your name? Really? What is this? Yeah. What's the date today? Thank you. चलो भाई पैकअप करें क्या क्या करें? पैकअप ना? Powerful positions that makes us feel very very. But I think the government is now waking up to the fact that yes, there is a requirement of change. Still all eyes on the door. Still times when you needed to have a degree to get a job. Now you probably don't need a degree to get a job. You need a lot more other skills. We should make our curriculum change to this new reality. Like I said earlier, we are preparing these kids for jobs that do not exist. When I was in school and college, Amazon and Facebook did not exist. We did not know, we did not think that there will be jobs. Okay, so I believe that every child, every adult dreams. But because they are conditioned to fear that they might want to follow their dreams, that they actually very quickly forget their dreams. So when you wake up, you know you've dreamt. You know that it's been an exciting dream, but you actually don't remember it. The difference is that creative people actually remember their dreams. And what happens is that everybody more or less dreams on the same basic denominator. And dreams are not about yesterday. Dreams are not about today. Dreams are about tomorrow. And your greatest desires, which you actually allow during the REM time to open up and release from your fear that have been put in you while you're following that dream, which you've been conditioned not to do. So everybody is creative. It's just that you are. You know, for me, creativity is really something that cannot be defined because it is very, very individual. It's an individual expression, which, like Prahlad said, will find words or expression without fear. Because all of us have it in us, but creative people are those who manage to express
themselves. So it is very individual. So according to me, there is no definition of creativity. It is. I'd like to sum up by saying that, you know, like Mr. Prakash said, there's a child in all of us. It's important not to forget that child, including teachers, especially teachers. Don't forget the child in you, because they say everything you need to know about life you learned in kindergarten, right? So stay in kindergarten, don't forget the child in you, and the creativity will just flow. No, you know, I would have happily sat in on the session, Oh. but Priya next to me, I'm not sure Priya is going to appreciate that, because there are, I think, 4 more sessions. I came in to hear what you'll have to say because I have 2 kids at home, my niece and nephew. My sister has twins. So I was very keen to hear what you'll have to say, but Priya dictates. We can have another conversation anytime. Yes, most definitely. Just to quickly introduce everybody on the stage to you, because you missed that. Kaustubh and Dexter are actually faculty landlord, and this is Mrs. Archana Goenka. She's the managing director and chairperson for Siki Goenka Group of Schools. And this is Kanak. Okay, last one. This is Kanak Jaipuria, and he's the managing director of the Jaipuria Group of Schools, MR Jaipuria Group of Schools in Delhi and all over the country. So, ladies and gentlemen, these are the educational people who will be on the applause. Let's not be stingy. Thank you. Please side up. Everyone, please be seated. Everyone to give a thunderous applause as we invite you to the Okay, अगर आप इस सेशन का मजा लेना चाहते हैं तो मोबाइल so very much for accepting our invitation and being here. Let's give her a good round of applause. I can see everyone is smiling like, yeah, that's it, yeah. No, thank you for having invited me the 2nd year in a row, and I'm glad I could be here this year. There's also a special reason because Prahlad Thakkar has always been an enigma for me. You know, I was doing advertising and he was the pap of advertising. He still is, even though he's not directing as many ad films by choice, because he's busy skydiving. No, it's not scuba diving, sorry. But I worked with him on one ad film. I have to tell you about my experience before we start. You know, he just kept bouncing a ball off the wall while directing us. And I was like, why is he not paying attention? Am I not good enough? But that's Prahlad Thakkar for you, because he could do, you know, so many different things. And I guess there is, his mind works at various levels. So he had answers to all the questions. The shoot went off absolutely fine. He doesn't even remember the ad film I've done with him, so never mind. I can see that look on your face, but I remember it. It was for the 2-minute. It was for some small, I don't think they showed it too much, but I was damn thrilled I worked with him. And I haven't had the opportunity to work with him since, but when he called me, I said, I'm going to be there. There's no way I'm going to miss this. So. Thank you, lovely. Let's give it to Prahlad sir, please. Okay, we have done this once before. Yes. आप में ये खुजली कब से? I think तो हिंदी में कहूँ कि अंग्रेजी में मैं 8 साल की थी नहीं सॉरी मैं 8 साल की थी and 1, 2, 3 रिलीज हुआ था
I saw Madhuri Dixit and I said, oh my God, मैं Madhuri Dixit बनना चाहती हूँ, literally. And I just, मेरी बहन के पास एक ब्राउन कलर का सिल्क स्कर्ट था जिससे वो नफरत करती थी, तो मैं वो अपने बाल पे मतलब सिर पे लगा लेती थी और जैसे माधुरी ने वो ट्विस्ट किया हुआ दुपट्टा पहना था, जो भी हेड गियर था उसके तरह मैं पहन लेती थी स्कर्ट और आईने के सामने घंटों नाचती रहती, because I was convinced that I was junior Madhuri Dixit. So that's how it all started. तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि हाँ ठीक है, हर बच्चा you know at some point like he said wants to be an actor, so कौन सी बड़ी बात है, ठीक है. But this पहले तो लगा कि अच्छा थोड़ा है, फिर और बढ़ा कि एक वक्त के बाद लगा कि अगर मैं इसके बारे में कुछ ना करूं तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में. That's when I think I was around 9-10 when I realized that this is what I want to do. Maybe even 11, by which time there was no doubt in my mind that this was not a passing phase. That this itch had taken over and I had to do something about it. Because I think, you know, all of us have some itch or the other, but you have to nurture it. कहते हैं ना, कभी-कभी खुजाओ तो ज़्यादा खुजली होने लगती है. यही है. Okay, we all know that we have read about you. I think so. I don't know of. I should call it failure. So how did you survive that? And like nothing happened, and you were in Hindi films after that, and it's a long period. Yeah. So you know, I did Hum Panch in 1996, and I started work on Parimita in 2004. That's 8 years. In between which I graduated from St. Xavier's. I did my BA and then went on to do my MA at Kalina University because I said और कुछ नहीं तो पढ़ाई तो you know कहीं कुछ job तो मिल जाएगा. Because my parents had said graduation is like, can I turn a little because I feel I'm turning my back towards them. They're all like okay, my. They're all Vidya Balan Chauhan for 5 minutes now. So I kept studying, but South में मैंने एक मलयालम फिल्म की. I think शायद काफी लोग जानते भी होंगे अगर कहीं पढ़ा हो तो. I did a Malayalam film with the Mohanlal and a director who's very well established, Kamal. They've done 8 films together. सारे के सारे हिट थे. आठों फिल्म बहुत अच्छी चली थी. तो 9वीं फिल्म में मैं थी और फिर उनके बीच कुछ पंगा हो गया तो उन्होंने कहा अच्छा क्या हो सकता है जिसकी वजह से फिल्म बंद पड़ गई. So they blamed it on me. They called me jinx. Yeah. And हुआ ये कि I had been word of mouth काफी अच्छी थी मेरे ख्याल से after my first schedule on the film. तो तकरीबन 12 फिल्मों के लिए मैं confirm की गई थी. You know, in 2000, no one used to sign contracts, at least not in the South. I don't know if the situation has changed now, but तो 12 के 12 फिल्मों से मैं धीरे धीरे फिर निकाली गई. बिकॉज सबको लगने लगा कि अच्छा अगर ये पेयरिंग के बीच कुछ हो गया तो फिर शायद इस लड़की को छूना नहीं चाहिए. तो I slowly started getting news that I was being replaced in film after film, and it was heartbreaking. Tamil में फिल्म करने गई. One turned out to be a sex comedy and I was extremely uncomfortable. मुझे ऐसा बताया नहीं गया था. कान बंद कर लो बच्चे. But you know, so I opted out of the film. Then I was doing another Tamil film, and you know I got thrown out of that also. And I think because by then this thing that I was jinx had begun to play on my mind. I felt कि अच्छा nothing's going to work for me. For 3 years, you won't believe it. तब तक advertising में ऐसा था कि मैं किसी video test के लिए गई तो लोग कहते थे यार ये आ गई अब इसको ही मिलना है. It had just become a thing, you know. I'd done so much advertising work. पर उस 3 साल के दौरान I got replaced even in ad films. Like I would get confirmed for an ad film and then at the last minute I'd get told, no, you know, either something or the other, the client wants someone else or the budget is not working out. I think because
this fear. I really believe that fear is a self-fulfilling prophecy. The worst thoughts you put out into the universe invariably come true. Like my favorite is, you always say, oh God, what if? And you always follow it up by a negative. What if I'm not successful? Try the reverse. Every time a negative thought crosses your mind, try saying, what if I am successful at what I'm doing? And trust me, it works like magic. Yeah? Thoughts, reaches faster than the words. Absolutely, absolutely. मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ बहुत जरूरी है। डायरेक्टर के साथ बैठती हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि कि किरदार और उसकी दुनिया कैसी है, ये बहुत ज़रूरी है. So I ask lots of questions. I ask stupid questions. Invariably, I come up with a birth date for the character, favorite colors, and all these things. What food does the person like? Then in conversations with the director, and so far I've only worked with male directors. That's hopefully going to change very soon. But every time I sat with the director, I'd ask him things like, okay, if there was so and so situation, how would this person react? Just so I understand the person better. That's what I do. Baki, there is no process. There is no process, and I'm not a trained actor. And the only thing I try not to do is to intellectualize the process. I think because कभी-कभी ना कुछ नहीं भी समझो तो छोड़ देना चाहिए. I feel over time I've realized वो बहुत हम लोग. I think some amount of distance always allows for spontaneity, for creativity. So I like to give that space between what I'm doing and me. Keep that little distance. Parinita. There's a message on the radio calling army personnel back to the front. And for some reason, वो sudden जब आपका ऐसे दिल बैठ जाता है ना, वो मैं नहीं express कर पा रही थी. Because firstly, at 19, all you're thinking is, who to kiss. And and then you're suddenly being made to, you're expected to express these emotions which are very distant for you. These are not things that concern you. So I was really struggling, and at that time, Namita and Shubir told me something that changed my perception on acting. And when they told me that, acting is not just about having a nice face and about expressions. It's about feelings. What you feel is what you will be able to put out there. And importantly, they said, acting के लिए कोई training की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़िंदगी जीनी पड़ती है. आप पढ़ो, किताबें पढ़ो, गाना सुनो, हर तरह का म्यूजिक सुनो, थिएटर देखो, फिल्में देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो. And there's no bigger training ground than life itself. I think that really, really changed the way I look at acting. And I started doing that. I started going for every play, watching every film festival में हो, theater में हो, गाना सुनने लगी, music concerts में जाने लगी, किताबें पढ़ने लगी, and it just opened up my mind. Because it's not possible that you live every experience that you're going to portray on screen. But at least this is borrowed. The reference is from borrowed experience. When you've read or seen it in another film or spoken to someone who's gone through something. And I think that, sorry, I've completely forgotten why I started saying all We're talking about we don't need to learn acting. Yeah. मैं भावनाओं में बह गई. So I really think that it's not important to be trained in anything, but if you get a training, that can only accelerate the process. But I don't think it's absolutely essential. And though I will say that why I feel the school and college system is important is because
that experience is very valuable, of just going into a classroom with other students, talking to teachers, and these days there are very innovative ways of teaching, you know, so that can open up your mind. When I tell my parents that, you know, I don't want to study anymore, I'll do it through correspondence, my parents would say, but you know, you can't go back to college life. You'll miss out on these precious years. You can work for the rest of your life. And I'm so grateful to them for they said that, you know, because I would say it's not what they teach you, but it's the experience of learning that is really, really precious. Thank you. And it disrupts it. And it disrupts it. It destroys it. But she's also a disruptor. Paula? Yes. Thank you. Yes. Where's the little one? She's the star. Yeah, she's really. Your daughter? Yes. Despite her. Thank you. Thank you. Anything sweet? You know how much to Yeah, ma'am. we are structured changing, being well, Learning acting, making, she'll do anything that she wants. Yes. You're too good. Cartoon she's. You're in HFS, I didn't know that. All my daughters go there. The principal was here. She just came to. Come on, give her a hug. Take the photograph and look into the camera. Give her a hug. Priya, come. Yes, take this photograph. Quickly, you're going to miss the moment. Come, Don't jaldi. care about all that shit. Jaldi, jaldi. जब मौका मिलता है तो हाथ मारना नहीं तो आ गया दिखाओ show me the photos. Ma'am, one photo without the kids. Without the kids. Just. Thank you so much. Thank you. Huh? मुझे चलेगा, कुछ भी चलेगा। ए नहीं। सेशन के बाद बस इनके साथ बस। हाँ वो तो। हाय। दोनों रवि नेबर्स भी हैं क्या? हाँ वो पता है। हाँ सेम वही मैं पूछ रही हूँ। कुछ और हाँ वो सोन चिड़िया का चल रहा है। कल रिलीज है ना? हाँ हो गया। ग्रेट। Can't wait to watch it. चलो रोल है। ओके विद्या जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कितने एक्साइटेड हैं आप समिट सेशन के लिए, क्या कुछ कहना हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ मुझसे बहुत बुलवाएंगे, पर इन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इसका नाम है इच समिट। मतलब हम सब में खुजली होती है ना कुछ करने की लाइफ में, उसी इच को, उसी खुजली के बारे में कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने उस इच को नर्चर किया और आगे बढ़े और लाइफ में कुछ किया, उसके बारे में है। तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ सही किया है, इसीलिए मुझे इनवाइट किया है बात करने के लिए। पर आई थिंक द आइडिया इज ग्रेट। वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि वो सवाल करेंगे, मैं सिर्फ जवाब दूंगी। मैं कभी सवाल पूछती नहीं हूँ पहले, तो जो सवाल करेंगे उसके हिसाब से मैं जवाब दूंगी। पर आई गेस इट विल बी अबाउट माय जर्नी। यही कि हमेशा जो आपका दिल करे वही करिए, क्योंकि यू नो काफ़ी बार हम लाइफ में वो करते हैं जो हमें करना चाहिए। मतलब जो लोग हमसे कहते हैं, जो परिवार के लोग कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं या हमारे पार्टनर्स कहते हैं, पर आप
तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक वो आपके दिल से ना निकले। और वो चाहे कितना भी हटके क्यों ना हो, अगर वो दिल से निकली आवाज़ होगी ना, तो आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपने एक करोड़ की हम पाँच की थी टीवी पर, और उसके बाद आपको फिल्म एक्टर बनना था, वो जो इच की एक्टिंग की, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। साउथ की फिल्मों में 12 फिल्मों में आपको रिजेक्ट किया गया, बहुत मुश्किल था आपके लिए। तो उसको अब उसके बारे में आप क्या सोचते हैं जब आप इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं? यू नो, जब मैं उससे गुजर रही थी तो नहीं लगा कि ये स्ट्रगल है या कुछ, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं ठाना था कि मेरे लिए रास्ता बहुत आसान होगा, क्योंकि मैं नॉन फिल्म परिवार से आती हूँ। यही दुआ करती थी अपने लिए कि मुझे मौका मिल जाए, तो छोटे से छोटा मौका जब मुझे मिलता तो मैं उससे अपना सब कुछ दे देती, क्योंकि मुझे लगता कि इसके बाद अगला मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता, पर अगर मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगी। तो मुझे याद है कि मैं FTI भी जाती थी, यू नो, जो कुछ दोस्त थे, कुछ दोस्त नहीं भी थे, पर मुझे लगता था अच्छा अगर कुछ यहाँ सीखने को मिले तो ये, क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, तो मैं चली जाती हूँ उनके लिए, फ़िल्म कर लेती हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपने आप को उस तरह से तैयार कर रही थी। तो आई थिंक I never looked at any opportunity as a small opportunity. मुझे लगता था यही मेरा magnum opus है, और इसी attitude से I think I kept moving forward. इस सबसे हटके एक सवाल, इंडिया के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है कि जो हमारा पायलट पकड़ा गया था पाकिस्तान में, अब उसे छोड़ा जा रहा है। बहुत अच्छा गेस्चर दिखाया है इमरान खान ने। No, I'm very happy that Captain Abhinandan is going to come back home safe and sound, and I can only imagine what his family has gone through. We were all so anxious, so I can only imagine what the family must have been through. And I just hope and pray that somehow peace prevails. Really. Because an eye for an eye will turn the world blind. Thank you. Yeah, thank you very much. अब वहाँ मिलेंगे। विषय और प्लेटफॉर्म जैसे आप जानते ही हैं इसी का है, एंड प्रहलाद कक्कर स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ब्रांडिंग के ज़रिए ये आज समिट रखा गया है। एंड आई थिंक ऐसे मंच बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जब बात करते हैं अगर मोटिवेशन की, और स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को मोटिवेट करना कि आपका इच जैसे ये है इसका नाम समिट का, लेकिन एक्चुअली मैं कहूँगी कि आपका पैशन क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सो आई थिंक दे बेसिकली गॉट दिस ट्रेंड सेटर्स काइंड ऑफ अ थिंग। हम गिन चुन के लोग जमा किए हैं प्रहलाद जी ने, कि हम आके मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को, इनकरेज करें, एंड just try to tell them that if we could do it, they can do it as well. Absolutely. Okay, what is your definition of success? Well, for me, success is a very, very different definition. I think it is, it definitely deals with dream big, because if you dream big and you have the sincerity to work hard towards your goal, you will achieve it definitely someday. हम होंगे कामयाब एक दिन, and I do feel when you know, if you've given your 100% and you've given your best, it will come to you. No one can take it away from you. रवीना, आप खुद ट्रेंड सेटर हैं और आज उसी टॉपिक पर बात करने वाली हैं, क्या कहेंगी, क्या मेन जो लाइन होगी जो मोटिवेट करने वाली थी वो क्या होगी आपकी तरफ से? इस समय तो बहुत ही मोटिवेशन की ज़रूरत है। आई थिंक मोटिवेट करने वाली जो एक लाइन मैं समझती हूँ, जो मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आप सिंसियर हैं एंड आप में वो ज़ील है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, तो वो आपसे आपकी किस्मत कोई छीन के नहीं लेके जा सकता है। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ योर ओन विल, योर ओन इनर शक्ति दैट कैन मेक यू डू थिंग्स। एंड रवीना जी, जैसे कि हमने देखा इंडस्ट्री में आपने एक ट्रेंड सेट किया कि आप टॉपिक किसी भी टॉपिक पर आती हैं सामने से दिल खोलकर बातें करती हैं, वैसे ही और आपकी इंडस्ट्री के दोस्तों को कभी कभी
वो उल्टा भी पड़ जाता है दिल खोल के बात करना. But I do feel कि as citizens, जो हम लोग citizens हैं, अगर हम ही आगे बढ़ के अगर हम सब चुप मार जाएं और सब अपने आप के ही बारे में सोचने लगें तो देश तो डूब जाएगा. So I feel कि especially successful people who society has given you so much, our society, our people, our citizens have given us everything what we are today, our name, fame, everything is because of them. So what is the way that we can give back in return? So जितनी हमारी हैसियत है और जितना हम कर सकते हैं उतना हम लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए हमारी सोसाइटी, हमारे देश को वापस देने में. रवीना, जैसे आपने देश की बात की और मोटिवेशन की बात की, तो आपने कहा कि एक इस वक्त हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है. ऐसी क्या बात है जो आप बोलते बोलते रुक गए और आपने नहीं गए? दिल दुखता है when you hear about war, and that is not the scenario that you want to give your children for the future, but there has to be war against terrorism. Terrorism has to stop because it's not a war between countries. That is very sad because there are good people everywhere in the world. You can't generalize and say ye bura hai wo acha hai, ye bura hai wo acha hai. So the thing is that, but terrorism is something very, very scary for our future generations, for our world, for the entire world, and for peace in this region. Terrorism has to be eliminated somehow. That is the saddest part of it all. And रवीना जी, प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज आ रही है, जी. बहुत ही लोगों को पसंद भी आ रही है. आपकी भी वेब सीरीज आने वाली है, जी. हमें आप उसके बारे में बताएं कि क्या अपडेट है and कब तक ये अनाउंसमेंट? वैसे एक वेब सीरीज़ को मैंने ग्रीन सिग्नल तो किया है जहाँ आई एल बी वर्किंग इन, एंड बाकी 3 हैं जो विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम आरका एंड ए फिल्म्स ब्रांड. So we are working towards it. We just have to still get them on the floor. अभी बातें चल रही हैं, ये ऑलवेज प्री न्यूज़ आ जाती है तो अब तक कुछ फाइनल नहीं है. बट द डे इट विल बी, आई विल प्राउडली से सो बिकॉज दैट्स अ fantastic film and a very amazing brand to be associated with the KGF series. It's something which is really mind-blowing what they have done, and if I do say yes, I'll be proud to be associated with that brand. Thank you everybody. सर, तो कैसा था आपका सेशन? पहले तो ये जानना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक पे बातें सर, आपका एक्सपीरियंस पर भी जानना चाहेंगे. या तो सेशन जो था प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में, वो इसमें जब भी ऐसा कुछ होता है और सारे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलता है तो आप सीख के ज़्यादा निकलते हैं. यहाँ भी मेरे पास सीखने को मिला और आई थिंक जो अगला पड़ाव है हमारे देश के आगे वो यही है कि इतने यूथ हैं, क्या वो अपने अंदर झांक के कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जिससे वो उनके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है. अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता, उसके अंदर आपके अंदर का पैशन क्या है वो उसको, एंड स्कूल्स लाइक दिस हेल्प यू फाइंड दैट. तो जैसे आपने बोला आपको भी कुछ सीखने मिला, ऐसी कौन सी बात थी जो स्टूडेंट से आपको सीखने मिली? बेसिकली जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स की और यूथ की, अगर आप जब भी उनको मिलते हैं, वो कमरे में इतनी एनर्जी है, वो थोड़ा आप पे रब ऑफ करती. तो वो एनर्जी मैं आज वापस लेके जा रहा हूँ. बाकी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बट ऑफ द रिकॉर्ड जो बाहर जो थोड़ी बहुत बातें होती, तो उनके जो सवाल होते हैं वो बड़े ही दिल से निकलते हैं. और जब आप उन सवालों के बारे में खुद सोचते हैं तो एक ऐसा आप रीविज़िट करते हैं अपने अंदर को कि कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि लाइफ हमेशा वहीं से शुरू होती है. जब आप 17, 18, 19 साल के होते हैं, आपका करियर बनना शुरू होता है, आप सोचना शुरू करते हो. What is your definition of success? I don't think there is anything called success or failure as such, क्योंकि हर चीज़
को आप यूनिलैटरली नहीं देख सकते, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं. तो आई थिंक सक्सेस एंड फेलियर आर ट्विन्स एंड दे गो हैंड इन हैंड. My definition of success is you should give yourself permission to fail. Essentially, there is a lot of noise around you. कि ऐसा करो, वैसा करो, ये कोर्स करो, ये डिग्री लो, इससे ये होगा, ये सिक्योरिटी होगी. वो सब सुनना बंद कीजिए और जो आपके अंदर की आवाज़ है अंदरूनी, उसको सुनिए. इज़ वन लाइफ. ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप उसके कोई आपको माइलस्टोन मनाने पड़ेंगे कि मैं जब 25 साल की होंगी तो यहाँ पहुँचूँगी, 27 में यहाँ, 30 में इधर. उससे कुछ होने वाला नहीं है. क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, बहुत लोगों को मिलता हूँ, तो जो आपको ऐसा समझाया जाता है कि ये टारगेट्स हैं, वो आई थिंक यू डोंट हैव टू टेक दैट सीरियसली. यू हैव टू टेक योरसेल्फ सीरियस. जब इस तरीके का जब कोई सेशन होता है, जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, यंगस्टर मिलते हैं, तो आपका कोई ऐसा कोई टाइम याद आता है जब आप कभी मिले हो, जब किसी ने कोई आपको कोई टिप या कोई एडवाइस? हाँ, 100%. हर समय. और ऐसा टाइम याद नहीं आता. वो हर रोज़ हम कई लोगों से मिलते हैं, और ख़ास करके जिस लाइन ऑफ वर्क में मैं हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, तो बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है. और हम कई बार सुनना बंद कर देते हैं. we stop hearing, we just listen. तो वो एक कान से बात आके दूसरे कान से निकल जाती है. तो अगर हम ध्यान से सुने आगे वाला कहना क्या चाह रहा है, तो शायद और समझ में आएगा. सर, आपकी फिल्म आ रही है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, क्या उसके बारे में इंटरेक्शन हुआ स्टूडेंट्स से? हाँ, उसका आज ट्रेलर दिखाया गया और उसके बारे में बातें हुई. लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है. नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. It's a very challenging subject. मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर takes up the issue of women's safety. It talks about rape as a social evil, talks about it and makes you feel about it. It's not about justice for rape or revenge for rape. और ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारी जो मानसिकता है women को लेकर, उसको कहीं उस बारे में सोचने की, उसको बदलने की एक कोशिश है इस फिल्म में, जिसमें एक 8 साल का बच्चा देश के प्राइम मिनिस्टर से पूछता है कि मेरी माँ के साथ बहुत गंदी बात हुई है, अगर आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता. सर, आपने फिल्म बनाई मेरे प्राइम मिनिस्टर, और इस वक्त जो देश में हालात है उसमें आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहने वाला कुछ नहीं हूँ, ना मैं क्वालिफाइड हूँ. आई थिंक दिस इज़ सिचुएशन वेयर our country is going through, or we have to stand behind our country, the people of this country and the armed forces. इसमें हम जितना अपनी wisdom झाड़ेंगे और उसमें confusion ही पैदा होगा. We are not qualified to speak on this. We don't have the sensitivity to speak or the bandwidth to talk about it. Right now, it should be and forever. It's not something which, as a normal citizen of India, I am qualified. तूफान पे पहुंच गया. हाँ, कहाँ से कहाँ जंप आ रहा है. वो शूटिंग शुरू करेंगे अगस्त में, यही अपडेट है तूफान के बारे में. और बहुत अच्छी फीलिंग है कि भाग मिल्खा भाग के बाद अभी फरहान के साथ फिर पार्टनरशिप हो रही है, कोलैबोरेशन हो रहा है. हाँ, सवाल क्या है आपका? वो कहानी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. हम दोनों की हमेशा चाहती है हम फिर से काम करें, कोलैबोरेट करें लाइफ में आगे बढ़ के. बट जब ये कहानी सुनी हम दोनों ने, अंजुम राजा बले की कहानी, तो कहानी ने बहुत एक्साइट किया हमें, और इमीडिएटली वी थॉट हमें ये करनी चाहिए. सर, कभी ऐसा हुआ है क्योंकि वो भी डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते हैं, आप भी डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फिल्म, कभी कोई आइडिया से कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के बीच? या आप लोग शेयर करते हैं? बिल्कुल शेयर करते हैं. मैं तो सारे आइडियाज़ सबके साथ शेयर करते हैं. और फिल्म मेकिंग इज़ अबाउट कोलैबोरेशन. इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट. आप म्यूज़िक कर रहे हैं A.R. रहमान के साथ, शंकर एहसान रॉय के साथ, तो उन पे छोड़ना चाहिए उनका काम. आप
आपके गाने गुलजार लिख रहे हैं, अभी तूफान के लिए जावेद अख्तर लिख रहे हैं, तो उन पे उनका काम छोड़ना चाहिए, बट फिर भी कोलैबोरेशन है, वो मेरी सुनते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ। ऐसे ही जब भी आप कैमरामैन के साथ, बड़े बड़े कैमरामैन के साथ मेरा काम हुआ है, विनोद प्रधान, अशोक मेहता, एक्टर्स अमिताभ बच्चन, आमिर खान, फरहान अख्तर, वहीदा रहमान, ओमपुरी, इन सब से मैं बहुत सीखा ही हूँ। और हमेशा एक लेन देन चलता रहता है। इट्स हाउ लाइफ वर्क्स लाइक दैट, फैमिली वर्क्स लाइक दैट। Movie making or making big bucks at the box Sorry? office. Movie making or making big bucks at the box office. What's your major agenda? I find it as a very boring question, that movie making or making money at the box office, because if only making money is the agenda of your life, then it's a very boring life now. Then anybody, any business, any work, if you're saying कि मुझे सिर्फ पैसा बनाना है, तो मेरे लिए तो वो बहुत बोरिंग काम है। Agree, disagree, yes, your choice, but you asked me, I told you. Yeah, I read their whole thing and उसमें कुछ एडिसन एंड सब के बारे में बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगा, मुझे पता नहीं मुझे क्यों बुलाया है। सो I'm a filmmaker and film related कुछ बातें होंगी और लाइफ स्टोरी, that's it. See, in filmmaking, there are no actually tips in terms of people make their own tips. No one can teach filmmaking to anybody. क्योंकि acting or direction कोई सिखा नहीं सकता. It's there inside you or it's not there inside you. It's just that you need to tap the right points and decide where it is taking you. So that's the thing. And if we talk about something and kids get influenced by that, nothing like it. And what is your definition of success? Success का कोई definition नहीं है यार. It's success ज़्यादा सर पे चढ़ जाए तो भी खराब है और ना है तो भी खराब है. So one film works and I'm sitting right in front of you guys. आपको बधाई हो giving this interview. So that's success, and success should be under control. और ऐसी कौन-कौन सी स्टोरीज आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी जो हमारे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सिनेमा में अप्रिशिएट की जाएंगे, समय बधाई मिलेगी? अभी जो मैं नेक्स्ट फिल्म पे काम कर रहा हूँ वो फुटबॉल रिलेटेड फिल्म है. इट्स अ पीरियड फिल्म. 1952 to 1962 का एरा दिखा रहे हैं हम लोग. और मिस्टर अजय देवगन इज प्लेइंग मिस्टर सईद अब्दुल रहीम्स पार्ट. Mr. Saeed Abdul Rahim was our Indian coach at that time, फुटबॉल कोच थे. तो उससे रिलेटेड फिल्म है जो अभी 2-3 महीने में ऑन फ्लोर जा रही है. एंड जो आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, आपकी स्टोरी से इंस्पायर्ड होते हैं, उनको क्या कुछ मैसेज जाएगा आपकी तरफ से? मैसेज यही जाएगा दैट कीप लुकिंग फॉर द गुड फिल्म्स एंड अच्छा समय चल रहा है फिल्मों के लिए, बिकॉज अच्छी नई नई कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं. अनकन्वेंशनल कहानियाँ सुनने और देखने को मिल रही हैं. सो एंड आई एम हैप्पी दैट वो फिल्में चल रही हैं, तो लोग जाके देख रहे हैं तभी चल रही हैं. सो मैसेज इनफैक्ट उनसे हमको मैसेज मिल रहा है दैट की कीप मेकिंग गुड फिल्म्स एंड गुड स्टोरीज एंड न्यू काइंड ऑफ स्टोरीज. एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहें कन्वर्सेशन. So how has your experience been about this entire summit? What do you think about it? Like I entered and I've been given a lot of hampers and I'm like, I asked that is this happening only for like once a year or so. Experience is already good. Let's see what happens inside now, because standing behind the camera is different and standing in front of many people it is different. So I'm a bit nervous. Let's see what happens. Yeah. Sorry? Can I get your cards directly if I'm asking for this also? I don't carry my card, so. Okay. Yeah? हाँ.
यार मुझे तो लोगों से पूछना पड़ेगा उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मुझे बहुत मज़ा आया। वो सब बातें जो बहुत पुरानी बातें हो गई थी उनको दोहरा के वो टाइम शायद मैंने फिर से जी लिया कुछ, और बहुत मज़ा आया मेरे को, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड पीपल वर रिसेप्टिव। लोग जब रिएक्शन देते हैं तो और भी अच्छा लगता है। सो आई रियली लाइक्ड इट। कैसे देखते हैं आप इस समिट को एंड ओवरऑल? और ज़्यादा होना चाहिए और अच्छी बात है। साल में 2 दफ़ा होना चाहिए, 3 दफ़ा होना चाहिए, और भी ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे। We just have one more small interview. Yeah. Yeah, you want to you will send